Welcome friends for this students webinar which has been organized by the Department of Physics of Millia Arts Science and Management Science College Bid. Here I would like to share with our guest. One is from Germany, Dr. Ashfaq, who is the alumni of the department, and one is our Dr. Siraj Arzu, who is the student of our department and now he is working as a headmaster of the Al Huda Urdu School, and he is also working as a journalist. Friends, all of you are familiar that our Department of Physics always organizes this such type of activities, and you know that particularly on the 5th September, the Department of Physics generally organizes a senior student teachers junior event, but when the college was in the offline mode. But unfortunately, from the last few days, our country is suffering from a pandemic of corona, that is COVID-19, and the lockdown has been imposed by the government, and since from the March, all of we are at our respective homes. Education is also being get limited, even though offline classes are not in action, but online classes are started, and as you know, we have conducted some online classes. So by taking this opportunity, that instead of organizing the senior student teacher junior activity, with the discussion with my colleague, I have decided to organize this student webinar on the view of Teacher Day of the 5th September 2020, and therefore we have scheduled here. As you know, all the guests and students are also being joined here. So far nearly 20 students are joined here. तो एज यू नो, जैसे कि आप साहब जानते हैं कि हमारी एक तहजीब है, हमारा एक कल्चर है कि हम किसी भी ख़ास काम का या किसी नशिस्त या मजलिस का इजलास अल्लाह तबारक ताला के कलाम पाक से करते हैं। तो मैं इसी के लिए हमारे बीएससी सेकंड ईयर के हाफिज़ मुकब्बिर को दावत देता हूं कि वो तिलावत कुरान करें। हाफिज़ मुकब्बिर हैं, ये प्लीज़ माइक ऑन कीजिए और तिलावत कुरान कीजिए प्लीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
وأخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. شکریہ مکبر. یہ حافظ مکبر صاحب تھے جو میں آپ کے گیسٹ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بی ایس سی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے اور گیورے کے دارالعلوم میں زیر تعلیم بھی ہیں, دینی تعلیم سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں. ناؤ میں آئے invite the BSc third year student Miss Mirza Madhiya Samin to express her views on the occasion of this Teachers Day. Miss Madhiya Samin of BSc second year, please mic on کیجئے اور آپ کی تقریر پیش کیجئے پلیز. کامیابی کو دعوت دے رہے ہیں اور کامیابی ان کے پاس کبھی نہیں آئے گی. استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے. مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کوئی معمولی کام تھوڑی ہے. والدین وہ ہستی ہے جو بچوں کو عرش سے فرش پر لاتے ہیں، مگر اساتذہ کرام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو بچوں کو فرش سے عرش پر پہنچاتے ہیں. آج ہماری تاریخ بڑے بڑے لوگوں کی شخصیتوں سے کیوں محروم ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دن بدن اساتذہ کرام کا ادب احترام بھولتے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق علم و ہنر کی گہوارے سے ہے، جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ہمارے ایسے اخابر کے خون پسینے شامل ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کر کے اپنی مثال پیش کی، اور آج دنیا یہی پیش کرنے سے عاجز و خاطر ہے. میرے کچھ پڑھنے کی خواہش آپ تھے، میرے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی آپ تھے، میرے سب سے قریب بھی آپ تھے، وقت کی اہمیت سکھانے والے بھی آپ تھے. میں نے دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا آپ سے ہی سیکھا، میرے یہاں بیتے ہر پل کو یادگار بنانے والے بھی آپ تھے. میں آج جو ہوں وہ مجھے بنانے والے بھی آپ تھے. تم ہو تو یہ انجمن ہے، تم ہو تو ہماری افسانے ہیں، ہماری کامیابیوں کے حصے ہیں. تم ہو تو ایک عزیز مسکراہٹ ہے، ایک عزیز دریا دلی ہے. تم جو روز روز وقت سے 2 منٹ پہلے آتے ہو، وہ قاعدے کی قصے سناتے ہو، وہی گنی چنی پرانی غلطیوں پر پورے امان کی روب سے چیختے چلاتے ہو. تم اتنی محبت کہاں سے لاتے ہو، تم اتنی محبت کہاں سے لاتے ہو. ہماری لائف میں استاد کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف ہمیں پڑھائی لکھائی، بلکہ ہماری لائف میں استاد صرف پڑھائی میں ہی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے بلکہ ہمیں اچھا انسان بناتے ہیں، ایسی باصلاحیت کوالٹیز کو ہمارے اندر ڈیولپ کرتے ہیں جس کے چلتے ہم اپنی پرسنل لائف میں گرو کر سکیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ استاد ہمارے کریئر کو لے کر ہمیں گائیڈنس بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ہمارے کالج کے اندر کوئی کلچرل پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر ادر ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کرواتے ہیں تاکہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ادر ایکٹیویٹیز میں بھی اچھا پرفارم دے سکیں. زندگی میں جیت جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہار جانا بھی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے. بڑوں سے ہار جانا ہی کامیابی ہے. اپنے ماں باپ سے، اساتذہ سے کبھی بھی جیتنے کی کوشش نہیں کرنا،
ان سے آگے نکلنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی ہی دعائیں ہوں گی جو ہم سب کے لیے کامیابی کا باعث بنے گی۔ مجھے یہ بتانے کی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بااخلاق باصلاحیت اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی اس بات کا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میرے گریجویشن کو 2 سال اتنی تیزی سے چلے گئے کہ مجھے وقت کا پتہ بھی نہ چل سکا، لیکن میں ان 2 سالوں کے وقفے میں تمام اساتذہ سے بہت کچھ حاصل کیا، خاص کر ہمارے ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے اساتذہ سید شوکت اللہ حسینی سر، جن کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ مجھے بہت پسند آتا ہے، اور اسی ڈپارٹمنٹ کے دوسرے ہمارے استاد ہے ڈاکٹر شیخ رئیس سر، اور ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کے میرے ہر دل عزیز اساتذہ مومن وسیع الدین عنایت سر اور ہماری میڈم صاحبہ سیدہ فرام فاطمہ نہری میڈم اور دیگر تمام ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ ہیں، جن کو میں اس ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر اپنی طرف سے اور تمام اسٹوڈنٹ کی طرف سے ان تمام اساتذہ کو ان کی عظمت کو ان کی محنت کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اب جو میرے پاس 1 سال کا وقفہ رہا ہے، اس وقفے میں اپنے تمام اساتذہ سے بہت کچھ سیکھ سکوں، بہت کچھ حاصل کر سکوں، اور ان جیسی کوالٹیز بھی اپنے آپ میں ڈیولپ کر سکوں انشاءاللہ۔ اب میں ہمارے کالج کے ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے سابقہ اسٹوڈنٹ جو کہ ہمارے سینئر رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان سے امید کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اپنی کامیابی کا سکسیسفل کریئر کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ اپنی اسپیچ ختم کرتی ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ ابھی بی ایس سی 3rd ایئر کی مرزا مدیحہ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی، ساتھ میں تمام ڈپارٹمنٹس کے اساتذہ کا بھی انہوں نے جو ہے مبارکباد پیش کی۔ میں تمام ٹیچرز کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب چونکہ ہمارے ساتھ مہمانان بھی ہیں، ہم چاہیں گے کہ انہیں بھی سنیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو 3 بچوں کے نام آئے ہیں، میں اس کے بعد بی ایس سی 2nd ایئر کی تحریم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تحریم۔ یہ بولیے تحریم، مائک آن ہے؟ مائک آن ہے کیا آپ کا؟ مائک تحریم مائک آن کریں، مائک، آپ کا مائک آن نظر نہیں آ رہا۔ آپ کا مائک آن کرے تحریم۔ آپ کا مائک آن نہیں ہے شاید، پلیز مائک آن کیجیے گا۔ This is one of the drawback of the high technology at the present moment. Dear chief guest, Siraj sir and Ashfaq sir, please deal with us, because all of you are familiar that we peoples are generally in the beginning stage of using this such type of technology. So please deal with us. जी सर, जी सर, यस सर। तहरीम का अगर माइक ऑन है तो जाने दो।
تحریم مائک آن ہو گیا؟ تحریم آر یو گیٹنگ می پلیز؟ سر آپ کی جانب سے انمیوٹ کر دیجیے مائک ان کا. ہاں ہوسٹ کر سکتا ہے وہ. ہاں کیا ہوں میں نے. جی جی. تحریم تو میں ریکویسٹ نہ ہوں. تحریم آپ رک جائیے. میں تنزع BSc سیکنڈ ایئر کی صدیقی تنزع سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد تحریم کریں گے جب تک کا مائک. تنزع پلیز. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, everyone. I hope you all are safe at your home. I am Siddiqi Tanazza Mashamin from BSc second year. As we know, today we are gathered here on the occasion of Teachers' Day. I really thankful to Hussaini sir who organized this program and give me this golden opportunity to share my thoughts in front of you all. I have chosen a different topic. Today, I want to say a few words on what is success and what type of dedication that we want to pursue our dream. Success, failure, dreams, goals, all are the part of our life. Everyone wants to be a successful person. But I think first we have to be good human being. Good human being should have a qualities of respecting elders, having a good manners, help a needy people, work with a patience, follow the right path. In our religion, the path that's shown by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we want to, we have to follow all the sunnat that's shown by our Rasul for the beautiful and successful life. In the other aspect, or if we look it from the worldly point of view, I think we should have to follow 3 rules. Number first, believe in yourself. Number second, do hard work. Number third, never give up. It really helps to be a successful life. Some days ago, I read a story of a man who wants to fulfill his dream. I really inspired by that man. So I think I want to share it with you. The story is of 1938. The person named was Karoli. He was from Hungarian army. He was the best pistol shooter in his country. He won all the national championships. He wanted to be a best pistol shooter in the world. He wanted to participate in 1940 Olympics. But unfortunately, one day an accident got happened in his camp. His right hand got injured. After that, he can't handle pistol with his right hand. But he never gave up. He rested for a month and he started training after a month. He practicing for a year. And after a year, he participated in a national championship with his left hand. And he got all the national championships. After that, he wanted to take a part in Olympics 1940. But it was cancelled due to the World War II. He tried to do in 1944, but same thing happened. At last, in 1948, he took part in it and created a history. He got consistent 2 gold medals in Olympics. All the shooters give their best with their best hand, but this man gave their best with his only the hand. He didn't focus what he lost. He focused what he have and fulfill his dream. I learned from this story is never ever give up. Don't do excuses. Just think what we have and what we will do. Just do practicing, do hard work. When we do our work with a passion, it reaches to the another level. Don't waste your life in just thinking. Just work on it. Someone says that problem is not too big. We are just too small to handle it.
just make our life meaningful. I end my speech with a beautiful quote of Sandeep Maheshwari. He says that if you are searching for a person who will change your life, just look yourself into the mirror. Thank you very much. Thank you and well done, Tanaza. Now may I request Tahreem now to cover up her speech within 5 minutes because the time is running on. We have two guests with us. Please, Tahreem, please. Tahreem, are you getting me, please? So please. So now may I request anybody want to say something within few minutes, then we will go to the guest. Please tell. Anybody, please? Now may I request Ashfaq sir from Germany. He is there, please. Ashfaq sir. Dr. Ashfaq from Germany, he is there. Mr. Ashfaq from Germany, are you listening me, please? हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है मेरी। हाँ, कोई तो और एक बच्ची थी जिसको बात करना चाह रहे थे। कांटेक्ट नहीं हो रहा है। Give her No, you time. So we have सर, आप सबको म्यूट करोगे क्या बैकग्राउंड में? क्योंकि आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप होस्ट हो ना, तो सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट ऑल। म्यूट किया हूँ। सभी म्यूट है। अच्छा। सर हेलो सर। सर हाँ, शेख तहरीम इनका माइक अभी शुरू हो चुका था, उनकी आवाज आ रही, कहना चाह रहे हैं कुछ। हाँ तहरीम, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए प्लीज। यहाँ पर वक्त तो हमने 2:45 का लिया था, 3:45 का, लेकिन जी खैर अपग्रेड हो नहीं रहा। ठीक है सर, मैं स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ सर, प्लीज यू स्टार्ट योरसेल्फ। ठीक है। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं आई थिंक सर एक चीज, ये मीटिंग शायद से विल एंड इन 4 मिनट, राइट? तो अगर ये खत्म होती है तो थिंक वी शुड जॉइन अगेन मीटिंग। तो आप सबको आप बोल दीजिए सिर्फ, क्योंकि मीटिंग रिमेनिंग टाइम 5 मिनट बता रहा है बस। आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है टाइम को। अच्छा, या आप शुरू तो कीजिए। ठीक है सर। 2-3 ओके, चलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स में इंशाल्लाह मेरी जो भी छोटे थॉट्स है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है अशफाक शेख और मैं बेसिकली अपने मिलिया कॉलेज 2006 बैच का पास आउट हूँ फॉर बीएससी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड I would like to thank Hussaini sir for giving me this opportunity to place my thoughts here and guide some of the student who may get help or who may get some benefit out of it, inshallah. And I would like to thank as well for
inviting and giving me this opportunity. I always think that helping our ex, ex our alumni or our college where we studied, we should visit and guide the students and tell them about the hardship or the difficulties that alumni has faced, so that the students who are currently studying, they can take benefit out of it. So एक कहावत है. So first of all, मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है because I'm from I studied in Marathi background. So मेरी उर्दू की कुछ mistakes होती है, तो I would like to excuse me. I would like you all to excuse me. तो एक मैं कह रहा था कि हाँ, एक कहावत है कि खुद के ठोकर से सीखना जरूरी नहीं होता, दूसरे के ठोकर से भी सीखा जा सकता है. So that's the reason I would like to share my experience as well. And like how can you आपका करियर की तरफ. So मेरा आज का टॉपिक होगा कि career opportunities after BSc, and how can you try to achieve your goal in with your and how to follow that path. अशफाक सर, जस्ट ए मिनट. हाँ सर. अगर समझो मीटिंग का वक्त भी हो गया तो मैं दूसरी शेड्यूल करूंगा. एक 2-5 मिनट के वक्त पे दोबारा ज्वाइन होंगे आप. अगर इंशाल्लाह. नहीं शुरू करता हूँ. 2 मिनट. All of you please. हाँ हाँ. I will arrange another 5 minutes. All of you please stay and join again, please sir. Inshallah. So before starting, I will just give brief introduction about myself. So I am Dr. Ashfaq. My educational background is I have done my MCA and PhD in computer science and BSc from Milia College. Then I have around 10 years of experience. I am working in Germany from last 7 years with Commerzbank. It's a German national bank. My designation is Assistant Vice President. I am taking care of development for some trading application in Commerzbank. And on this occasion, auspicious occasion of Teachers' Day, I would like to start my speech with a small quote about respecting about teacher who, as one of our sister already said, whoever teaches a single word to other one, it's basically a knowledge sharing, and which its reward will be given hereafter, unless that knowledge is be spread to the multiple branches. Like अगर हमने किसी को एक भी चीज ऐसी कुछ सिखा दी, ये अपना सवाब जारिया बन सकता है जब तक कि ये नॉलेज से कोई बेनिफिट हासिल करता रहेगा. So it's always, we should always thankful to our teacher whatever they have taught us and whatever guidance they have provided us. 4:30 मीडिया की मीटिंग है ना Zoom. So inshallah to हाँ अशफाक सर, आ रही क्या? अशफाक साहब शुरू कीजिए सर प्लीज. अशफाक भाई. अशफाक साहब, आ रही क्या आवाज मेरी? हाँ आवाज आ रही है. मैं सिराज बोल रहा हूँ. हाँ आ रही. आप अशफाक साहब आ रही क्या आवाज? अशफाक. अशफाक साहब आ रही क्या आवाज?
अशफाक साहब आवाज आ रही क्या मेरी? वेट करना है कि सर कुछ थोड़ी देर के लिए? नहीं, शुरू कीजिए साहब, आवाज आ रही है? हो गए लोग जाएंगे, 15 हो गए। अच्छा ठीक है, हाँ, शुरू कीजिए साहब। ठीक है। सो मैंने मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबको दिया अभी। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि in my success there was a lot of, or I would say very big contribution of our Milia College, especially our Department of Physics, Department of Chemistry, and Department of Computer Science. I was studying these 3 subjects in my graduation, and so I would like to just share my small story. Initial education of mine was done not in Beed. There is a small village called Kalam. Hussein knows it very well. This small taluka place in Usmanabad. I studied in a Marathi medium school, and I was an average student during that time. And in 12th, my results were very bad. So मुझे 12th में I got around 41%, and then I always wanted to be an engineer. I wanted to do my engineering in computer sciences, but because of my result, I could not get admission in any of the engineering college. But then some of my teachers, Alhamdulillah, Husseini sir is our also family friend. They guided us. It's not end of the story. Even if you have a bad results, that doesn't stop you achieving your aspiration, what you want to become. So then I took the admission in Media College with subjects physics, computer science, and chemistry. And there, Husseini sir and especially Husseini sir, and then our computer science department, Naeem sir and Shafi sir, they Alhamdulillah guided me throughout my path during the BSc. Always inspired me and guided me कि next आप क्या कर सकते हो, masters कैसे achieve कर सकते हो. And then my 12th result did not stop me achieving the good scores in BSc, then doing the my MCA in Pune, and then going further for taking the job. So Pune, and when I came to BEAD, I was not even able to speak a single word in English. That was my situation because अपने देहात से जो बच्चे आते हैं, of course उनको कोई इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता, बात करने नहीं आती है, and that always pull us back. कि पीछे हम खुद को पीछे रखते हैं. We hold ourselves back because of that reason. We feel ashamed. मुझे इंग्लिश नहीं आती है, कैसे होगा? How can I be successful? अगर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो how can I be go to ranks? It's not like that. And when I finished my BSc, so because our Amelia College guided me to how to proceed for the MCA entrance test and how to get an admission, which college to pursue. I did my MCA from Pune, not very big college, but JSPM college hai. And in that, because my foundation was already done in Amelia College, I was the not academically, but technically I was one of the top student. और उस कॉलेज से सिर्फ मैं अकेला स्टूडेंट था जो कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस हुआ था. 2009 was a big recession, and still only one company came to, like not one, 3 or 4 companies came, and one of from my class only I got placement in there. So reason behind telling my story is कि अगर आप 12th के स्कोर आपका अच्छा नहीं है या फिर ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा नहीं है, तो that doesn't mean that you are bad or you don't have capability to achieve what you want to achieve in your future. So what I would like to say using this platform is anyone who want to achieve anything or anyone who want to be successful in their life, it's never too late to start. You can start with 0 from today, and you have to decide I will give my 100% for that. So now I can say that at my position
Why the reason I already told you, saying behind my story is not to praise myself, is just to motivate the students. I know the student who come from the background like me, especially from like places like Kalam or Beed, they don't have exposure to the opportunities, number of opportunities that you have in front of you after BSc. After doing this, especially I will focus on BSc because a lot of students here join here who are studying BSc, especially BSc physics. There is a very bright future for that, and I would also share what are some opportunities with you that you can pursue after finishing your graduation. So uh, I would share one presentation which I created for especially for this event. Uh, Husseini sir, can you give me the permission to share my slide? Yes, I can share it now. I hope everyone is able to see my slide. तो अभी ये बहुत plain simple slide है, but I will try to explain what I want to, what you can do with this. Now the job, so there is job opportunity. Of course, everyone know UPSC, MPSC, and SSC. UPSC is basically the civil services exam for central. MPSC is of course again exams for our state, Maharashtra, and SSC it's a staff selection commission for multiple regions. It's in military. This is basically what you can go for if you want to start immediately working and have a job. But it depends how what your aspirations are and what you want to achieve. Then next slide. So if you want to go for further studies, so these are few options that you can go for. MS is basically the Master in Science. This can be done or this can be studied in India or abroad. तो अपनी जो BSc degree है Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University की, it is recognized worldwide, and using that degree you can apply for masters in abroad. So पहले ऐसा होता था अपनी 3 years की masters पे हम directly apply नहीं कर सकते थे, but now it's possible. So one of the countries is Germany. You can see search on internet, or I will share some screen in the chat, share some link in the chat where you can search for the courses for physics, for mathematics, for statistics, for computer sciences, and Germany is one of the country who offers the masters free of cost. If you get admission in public university, you don't have to pay any fees. You just have to bear your own cost. That too, you can do it by yourself by doing some student jobs, which will make you earn sufficient amount to survive in Germany. Then you go to MSc. MSc is basically can be done anywhere in India. Even there is an option in Milia College or any other college that you want to join, or directly in university, BAMU University or any other university. Then if you have some computer background, or if you want to pursue a computer career, there is MSc in computer science and MCA, which requires I think mathematics in graduation, either in graduation or in 12th. So you can, if you have that, you have to give one CET, and then you will be able to take the admission in MCA. And but if you have a business mind, or if you want to do some management courses, then you can go for MBA. And there are some universities which offers masters plus PhD together. That means the course is clubbed together of 6 year, 5 year. So here then 1 year is reduced, so you can have 2 years or 1.5 year of masters and 3.5 years of PhD. So that you can get directly the PhD. As soon as you get admission to masters, you get fellowship in 1.5 year with some stipend. This is also possible in India and as well as in abroad. So these are the few options that तुम लोग इसको perceive कर सकते हो, and basically these options will give you a lot of job opportunities, and
especially focusing on now this event is organized by our physics department, so there is a lot of scope in physics as well, because as you know, if you go for there are a lot of research going on in physics right now, and at the same time there is a lot of opportunity in abroad, especially in Germany, because if you open the history of physics, there are a lot of major scientists belongs to Germany. That's the reason I know about it. And one of the scientists is Albert Einstein. He was basically the native of Germany, but then migrated to US, and then from there he has invented his very famous equation, and he got Nobel Prize and all. So these basically are areas where you can pursue your further educations. But you will have to, so before going that, first of all you will have to, if any one of you has thinking or a mindset that I have a very poor background, or I'm not financially very well, or I am my family is not well educated, or मैं खुद इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैं खुद इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता, how can I go for that, I cannot afford it. This you have to keep aside, and you have to say, starting from today, focus first what you have to do the best thing what you have to achieve. So for example, if you want to achieve career in physics, or let's say computer science, I will give my example. And in computer science there are also multiple specializations. तो उसके अंदर आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, फोकस ऑन दैट, और उसके अंदर आपका जो है फाइनल उसके ऊपर फोकस रखते हुए you start your career path. I want to be a specialized person in this direction, and take the steps. Always take the guidance from your teacher. Teachers are the best guide, I would say, to guide you on your path that you want to, or to guide you on the destination that you have planned. Inshallah, to always keep in touch with your teacher. Ask them their suggestions, and always consider their suggestions, and inshallah you will be successful in your life. So there is a very famous quote, even though I'm not from Urdu background, but it's very very famous quote. खुद ही को कल बुलंद इतना, हर तहरीर से खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. खुद को इस काबिल बनाओ कि you don't have to work for anyone. So जो दूसरे लोग आपको आके कन्विंस करे कि आप उसके लिए काम करें, तो खुद को इस तरह से कन्विंस करो. I have seen lot of student and examples in my life who were academically very very not strong until let's say graduation or 12th, and then after that they have grasped or they have accelerated themselves in studies, not in all areas and all directions, but the directions they want to achieve, the specialization they want to achieve, they have improved their public speaking skills or soft skills. Or nowadays the world is not about how good you are, first thing. It's about not only how good you are, also about how you present yourself, or how, first of all, getting job is basically selling your qualification or skills. And the good as you able to sell, or what we say, market your skills, the more value you will get from the industry or from the job market. This is basically about the job, that you will have to focus on these small things. Inshallah, I would have conclude my speech saying that whatever you want to achieve, focus on your goal, and try to be not खुद के बारे में कुछ कम मत समझो, और हमेशा अपने टीचर्स की गाइडेंस लो. और मिलिया कॉलेज, I would say, one of the best source to guide you for your best future. I would like to thank Hussaini sir for giving me this opportunity, and I would conclude my speech saying Jazakallah khair for all the teachers of Media College for giving me this opportunity and guiding me throughout my journey during my
graduation. Jazakallah khair. I will end my speech. Thank you. Thank you, Ashfaq sir, for guiding our student by the motivational speech. Now may I request सिराज सर, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें, उसके बाद प्रोग्राम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सब अपना मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है आपकी आवाज। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ कर लें। मैं तो यहाँ से किया हूँ म्यूट, फिर भी अगर किसी का हो ऑन तो ऑफ कर लें, सिवाय सिराज सर के। प्लीज सिराज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यौम क़यामत के मौके पर मेरे तमाम असातिज़ा के लिए पहले भरपूर मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे। आज यौम असातिज़ा के मौके पर मेरे उस्ताद डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब ने ये जूम मीटिंग रखी और मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया। इसलिए मैं डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब का और मिलिया कॉलेज के इंतजामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मौका आज टीचर डे की मुनासिबत से यहाँ सबको मैसर कराया। मैं आज इस मौके पर टीचर डे की मुनासिबत से मेरे तमाम असातिज़ा इब्तिदाई तालीम से लेकर आज तक जिन्होंने हम पर मेहनत की और हमें संवारा निखारा, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उनके हक़ में दुआ गो हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान सिराज खान उर्फ सिराज आरजू 1999 से 2002 के दरमियान मिलिया सीनियर कॉलेज में BSc के लिए ज़ेर तालीम रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये हमारा ग्रुप हुआ करता था। उस दौरान मैं और नजीउल्लाह खान यूसुफजई और दीगर समेत कई स्टूडेंट्स, हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स में शुमार किए जाते थे, मोस्ट रेगुलर। साथ में डॉक्टर इमरान खान साहब जो भी मिलिया के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हैं, नोमान, समीर हनूरे, कामरान, हबीब चाउश, मतीन पटेल, टाइगांव से रईस, गुलाम और कॉलेज के दीगर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जो है वह करते थे। असातिज़ा में मेरे बहुत ही काबिल उस्तादों में मैथमेटिक्स के लिए मोमिन फसीउद्दीन सर, केमिस्ट्री के डॉक्टर एजे खान साहब, रमेश वारे सर, ठाकुर सर, अब्दुल रहीम सर, फिजिक्स के लिए डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी सर, डॉक्टर शफीउद्दीन सर, अंग्रेजी के लिए खास तौर पे डॉक्टर अब्दुल अनीस सर, मरहूम फारूक बेग साहब, उर्दू के लिए फरीद अहमद नहरी सर, जलील मसूद सर और दीगर असातिज़ा जिनके नाम शायद मैं लेना भूल गया हूँ या जो मेरे मज़ामिन से रिलेटेड नहीं थे, उन असातिज़ा ने भी हमें गाहे बगाहे मौका बमौका रहनुमाई की, हमारी तरबियत की। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर हनीफ सर हुआ करते थे। उनकी मोहब्बत, उनकी शफाकत भी जो है हमें मैसर हुई और आज भी जब मिलते हैं तो उसी मोहब्बत के साथ वो मिलते हैं। मैं इस बात को यहाँ पर कबूल करना चाहूँगा कि यकीनी तौर पर मुझे मिलिया सीनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम होने का इंतहाई फ़ायदा हुआ और इसके लिए हमारे असातिज़ा ने जो काविशें की वो इंतहाई काबिल क़द्र है। बीड़ जिले के खिला धारूर जैसे मुकाम से मैं यहाँ पर तालीम के लिए आया 1999 BSc में एडमिशन लिया। मुझे आज भी वो कॉलेज का पहला दिन याद है। सुबह 7 बजे का पीरियड हुआ करता था और पहला पीरियड फिजिक्स का था। इत्तेफाक से आज जो जूम मीटिंग के होस्ट है डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब, वो पीरियड लेने के लिए आए। इत्तेफाक ये था कि पहला दिन था कॉलेज के, दूसरे बच्चे नहीं आ सके किसी वजह से, लेकिन मैं पहुंच गया था। तो डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब ने, मैं अकेला स्टूडेंट, पूरा पीरियड 55 मिनट का पीरियड हुआ करता था, उतना पीरियड जो है पहला दिन वो वेस्ट नहीं जाने दिया। वो जो आज तक मुझे याद है कि भाई एक मिनट, एक घंटा किस तरह कीमती होता है और हमारे असातिज़ा ने किस तरह उसको गनीमत जाना कि एक बच्चा भी आया हुआ है, लेकिन उसको आज वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाहिर बात है भीड़ के बाहर के मुकाम से यहाँ तक पहुंचा
اور آج پہلے دن کالج کو آیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر شوکت اللہ حسین صاحب نے پہلے دن بھی پورے کمپلیٹ 55 منٹ تک، جب تک الیکٹرانک بیل جو ہے تو بچی نہیں، تب تک وہ جو ہے تو 55 منٹ لیکچر دیتے رہے. درمیان میں مجھے پوچھتے رہے کہ بھائی آر یو گیٹنگ، کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ اکیلے بچے کو بٹھا کے لیکچر دے رہے ہیں، اور جو ہے خوش بھی ہو رہا تھا کہ چلو میرا آنا جو ہے ویسٹ نہیں ہوا. آج الحمدللہ آپ تمام کی کاوشوں سے، جس طرح ابھی ایک ہماری بہن بچی جس نے بتایا کہ میں ان کے استاد ہوں، جنہیں ابھی جو بچی نے ابھی تقریر کی، اس مقام تک یہاں تک جو آنے کا موقع ملا، اس میں بالکل ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کا، خاص طور پہ ملیہ کالج کے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. آج میں الحمدللہ شہر و ضلع کا نامور ادارہ الہدا اردو ہائی اسکول میں بطور صدر مدرس اپنے خدمات انجام دے رہا ہوں. ساتھ ہی لکھنے وغیرہ کا شوق ہونے سے اورنگ آباد ٹائمز میں اعزازی طور پر لکھتا ہوں. ریگولر اپڈیٹ، تاریخی ڈاکیومنٹری کے ویڈیوز میں اور میری ٹیم سرکار ایکسپریس کے ذریعے بناتے ہیں. میں اس موقع پر ہمارے جو گریجویشن کے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ابھی ڈاکٹر صاحب نے جرمنی سے جو بات بتائی، ڈاکٹر اشفاق صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات رکھی انہوں نے کہ واٹ آفٹر بی ایس سی کی بات کیا کریں گے. تو اگر آپ اچھے سے بی ایس کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، تو جو کورسز ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے پی پی ٹی کے ذریعے بتائے ہیں، اس میں یقینی طور پر آپ کامیابی کے ساتھ داخلہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گریجویشن کے دوران طالب علم سے تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، یا غفلت ہونے کا امکان ہے، یا پھر توجہ تھوڑی سی ہماری کم ہو جاتی ہے. شاید میری بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن جو 10th اور 12th میں طالب علم کی کیفیت ہوتی ہے سیریسنس کے تعلق سے، وہ شاید بی اے، بی ایس سی یا ڈگری کورسز میں دیکھنے نہیں ملتی، یا پھر کم دیکھنے ملتی ہے. اور طالب علم اکثر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی وہ چک جاتے ہیں. اور میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے. یہ جو ڈگری کا پیریڈ ہے، اگر آپ اپنی اس ڈگری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ ڈگری کا پیریڈ آپ کو سیریس لینا ضروری ہے. ورنہ نام کی ڈگری تو مل ہی جائے گی. آپ کو بھی پتا ہے کہ 3 سال ایڈمیشن لینے کے بعد کس طرح گزر جاتے ہیں. جن بچوں کے 2 سال ہو چکے ہیں، وہ شاید ابھی اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تیسرا 2 سال گزر گئے، اس طرح تیسرا سال بھی گزر جائے. تو اصل صحیح یہ ہے کہ آپ نے ڈگری جس مقصد کے لیے لینا ہے، آپ اس سے غافل نہ رہیں. اگر ہم 10th میں 12th میں اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر سکتے، تو ان 3 سالوں میں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں. اچھا، ایک غلط فہمی یہ بھی سماج میں ہے کہ جو بچے کا 10th میں کچھ نہیں بن پاتا، یا میڈیکل کو، انجینئرنگ کو نہیں جا پاتا، تو شاید وہ بی ایس سی، بی اے وغیرہ کو لے لیتا ایڈمیشن. لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. میری نظر میں کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے شوقیہ طور پر بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا ہے. میں خود ایک ایسا طالب علم ہوں جس میں دیگر کورسز کو نمبر لگنے کے باوجود 12th کے بعد، انجینئرنگ کو نمبر لگنے کے بعد، یا ڈی ایڈ کو نمبر لگنے کے بعد بی ایس سی کو فوقیت دی اور اس میں تعلیم حاصل کی. لیکن اگر آپ 12th میں آپ جو کہ جتنا پرسنٹیج دیکھ رہا ہے، یا جو قابلیت آپ نے شو کی، جتنا آپ ڈسکور کر پائے اچھی بات ہے. اگر نہیں کر پائے تو بی ایس سی کا ان 3 سالوں میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ضروری ہے. تو ڈسکور یور سیلف. اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اس لیے خود کی صلاحیتوں کو پہچان کر اس کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارنا ضروری ہے. گریجویشن کے بعد آپ نے جو چاہے سوچا ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ گریجویشن کو سیریس لیں. ابھی حالانکہ آج بھی کیفیت نہیں ہے، کووڈ-19 پیریڈ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اسکول کالج بند ہے، ریگولر نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوگا درس و تدریس کا، تعلیم کا، تو آپ کو تب بھی سیریس لینا ہے. آج بھی آن لائن وسائل کے ذریعے آپ اپنے تعلیم سے جڑے رہ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی تعلیم سے جڑا رہنا ہی ہے. اب اور ایک خاص چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ گریجویشن کے دوران
मोस्टली बच्चे जो है रेगुलर नहीं होते हैं, या एडमिशन लेने के बाद एक नेचुरल ये कैसे बन जाती है कि कॉलेज तो जाएंगे कभी तो जाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है या आप रोज नहीं आ सकते किसी वजह से तो अलग बात है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आप ऑनलाइन वसाइल का इस्तेमाल करके अपना मदानी पढ़ सकते हैं। लेकिन दीगर सूरत में आपको कॉलेज जाकर ही डायरेक्टली फेस टू फेस अपने असातिज़ा से दरस तदरीस से आप मुस्तफिद हो सकते हैं। आज ऑनलाइन मवाद की कमी नहीं है। मैं तो मेरे देखने में ये है कि मीडिया कॉलेज के असातिज़ा ने भी भरपूर मिक़दार में ऑनलाइन मवाद बनाया है और अपलोड है। माशाल्लाह इन तमाम असातिज़ा, हमारे जितने असातिज़ा ये सब के सब काबिल हैं, हमें इनसे मुस्तफिद होने की ज़रूरत है बस। तो मीडिया कॉलेज का क्या असातिज़ा का नाम तो आप बच्चों के लिए आपने खासतौर पर सुना होगा, चांद तक पहुंच चुका है। आपने देखा कि चंद्रयान 2 में ये जो मिशन था इसमें डॉक्टर शफीउद्दीन साहब की शमूलियत थी और डॉक्टर साहब के साथ दीगर जो भी टीम थी उसमें डॉक्टर साहब ने अपना अच्छा रोल अदा किया और काफी नाम जो है तो मीडिया इदारे का इस वजह से हुआ। डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब के बेशुमार रिसर्च पेपर ऑनलाइन अपलोड है, गूगल पर आप सर्च करेंगे डॉक्टर शौकतुल्लाह हुसैनी साहब तो आपको अनलिमिटेड जो है तो नॉलेज उनके जरिए भी मिल सकता है। बाकी असातिज़ा जो है तो इसमें पेशकश हैं, आप तमाम से जो है तो रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। अगर कॉलेज नहीं आ सकते आप इस सूरत में, अगर आप कॉलेज आसानी से आ पा रहे हैं तो आपको तमाम के तमाम असातिज़ा रोजाना वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर बाकायदा लेक्चर में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है आप हरकत करनी, अगर आप हरकत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ज़रूरी है कि आप सुस्ती काहली ये जो है तो झटक दें और हरकत में आए। मैं और एक बार ये कहना चाहूँगा, इकबाल साहब ने अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुम्बिश से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। जुम्बिश यानी हरकत से जिंदगी है। आप बच्चों ने सुना होगा कि जो घर के ज़ईफ होते हैं तो अक्सर कहा करते हैं कि भाई हरकत में बरकत है। तो अगर आपको तालीम में बरकत चाहिए या आपके नॉलेज में बरकत चाहिए तो आपको हरकत करनी होगी, कॉलेज तक आना होगा, असातिज़ा से रब्ता करना होगा, उनसे बात करनी होगी, जो नहीं आता है उसे पूछना होगा। इकबाल ने और बड़े मजीद एक अच्छे अंदाज में कहा कि बेताब है जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। यानी आप देखिए पूरी कायनात में, क्योंकि फिजिक्स का जूम मीटिंग है, आप सब लोग इसमें ज्यादा बच्चे फिजिक्स के हैं, तो कोई शय जो है तो रुकी भी नहीं, रिवॉल्व हो रही है अपने कायनात में, निज़ाम शमसी में जितने सैयारे हैं। और बाकी इंसानों के लिए कोई बात साथ आती है कि आपको भी हरकत में रहना होगा। अगर आप जमूद का शिकार होंगे, हालत जमूद में आएंगे तो यकीनी तौर पर आपको नुकसान होगा। फिजिक्स का कानून भी, न्यूटन का कानून है कि जो चीज हालत जमूद में है क़यामत तक उसी जो है तो सूरत रहेगी जब तक कि कोई दूसरी फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो आपको हालत जमूद में जाना नहीं, आपको जुम्बिश पे रहना है, हरकत में रहना है। यानी मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि आप गाफिल ना रहें, सुस्ती का शिकार ना रहें और अदम तवज्जो से काम ना लें। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा आपको कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हाल में, तो उसमें तकरीबन 1000 बच्चों में से 54 बच्चे मुस्लिम के कामयाब हुए। ये बहुत बड़ा फिगर तो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन ये बहुत हिम्मत अफजा फिगर है। अब तक इससे पहले गुज़िश्ता दिनों में इतने ये तादाद में बच्चे कामयाब नहीं हुए थे। तो लेकिन ये ऐसा ही नहीं हुआ, इसके पीछे कई दानिशवरान हैं जिन्होंने काविशें की, जिन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट किए, जिन्होंने मिलत के बच्चों को, इन नौनिहालों को बेदार करने की कोशिश की और कि वो अच्छा से कमतर से बाहर निकले और यूपीएससी के इम्तिहानों को क्रैक कर सकते हैं। जब मैं 1999 में 2001 में जब बीएससी के लिए बीड में मीडिया कॉलेज में ज़ेर तालीम था, तो डॉक्टर शफीउद्दीन साहब फिजिक्स अभी कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में हैं, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में भी हैं। तो इनकी जानिब से और औरंगाबाद में आज बतौर सदर मुदर्रिस मुश्ताक बोहरा साहब हैं, वो भी जो है मीडिया में एक स्टडी सेंटर लिया करते थे। हम लड़कों के लिए खास रात में इशा के बाद हम रोजाना 9 से 11 बजे तक मीडिया के एक ऊपर का रूम ने हमें दिया था स्पेशल। उसमें डॉक्टर शफी साहब ने, मुश्ताक बोहरा साहब ने बहुत कोशिश की हमें मैगजीन, किताबें
और उस जमाने में नेट वगैरह की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो सीढ़ी की करा कर ली हमसे और डिबेट वगैरह भी ली। बहरहाल उसे उस क्लास से हमें फायदा भी यकीनी तौर पर हुआ, और आज उस नॉलेज का हमको आज भी फायदा हो रहा है। मैं चूंकि बहुत देर से मीटिंग शुरू है, बोलने के लिए तो बहुत से नुकात है, लेकिन मैं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और एक चार बातों का इरादा करना चाहूँगा कि हमारे खास तौर पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं या इस मीटिंग को बाद में किसी सूरत में रिकॉर्डेड सूरत में देखने वाले हैं, तो सबसे पहली मैं बात आज भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्कवर योरसेल्फ, आप अपने आप को पहचानिए। कोई कम नहीं होता है। अल्लाह ने हर एक को अपनी एक खास सलाहियत दी है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। अपने यूनिकनेस को पहचाने और उसमें काम करें। दूसरी बात ये कहूँगा कि ना रहें, जमाने में क्या चल रहा है इस ताल्लुक से आप अपडेट रहें और रोजाना अपने जो है नॉलेज में इजाफा बहरहाल आप करते रहें। तीसरी बात यह है कि आप मुकम्मल शऊर के साथ अपने मकसद की जानिब गामजन रहें। अगर आप यूं ही कॉलेज आ रहे हैं, यूं ही जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। डिग्री मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने पूरे शऊर के साथ, मुकम्मल शऊर के साथ आपका जो टारगेट है, गोल है, उसके लिए आप कोशिश करते रहें। नंबर चौथी बात ये कहूँगा कि आप ठहराव का, जमूत का या एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अपने आपकी काबिलियत को पहचाने, अपनी सलाहियतों को जाने और इन सलाहियतों को आप किस तरह इस्तेमाल में ला सकते, इसके ऊपर आप मेहनत करें। इकबाल जी की नज़म बहुत प्यारी है। मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा खास तौर पे कि चांद और तारे, ये अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, आप पढ़िए। जिंदगी का बहुत बड़ा सबक इसके अंदर मौजूद है। इसका हर शेर आपको हरकत करने पर और जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की रफ्तार में आपको दौड़ने की ताकत देगा इंशाल्लाह। एक शेर उसका मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगा, और कि निकले जरा जो निकल गए हैं, निकले जरा जो निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। अब हमें ये बात तय करना है कि हमें जमाने की रफ्तार के साथ चलना है या जमूत का शिकार होकर कुचले जाना है। कहने के लिए और बाकी बहुत बातें हैं। मैं खासतौर पे उन बच्चियों को, कॉलेज की तालिबात हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया, काफ़ी अच्छी बातें उनसे भी हमें यहाँ पर सीखने मिली, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने टीचर डे के मौके पर अपनी बात रखी और शामिल हुए। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, आजकल जो जूम मीटिंग हो रही है या और गूगल मीटिंग, जो भी तरीके से मीटिंग हो रहे हैं, बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं तमाम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें शामिल होइए, अपनी बात रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। भले ही आप कम बोले, ज्यादा बोले, आपको जो मालूम है वो बोले, लेकिन आप जरूर इसमें शामिल होइए, इसका एक हिस्सा बनिए। यकीनी तौर पर ये तारीख बने जा रही है कि इस तरह से भी विलिया में मीटिंग होती है और आज भी हो रही है। ये विलिया के तालीमी जो सफर है, इसके अंदर जरूर इसका जिक्र होगा इंशाल्लाह। नाज़िम जूम मीटिंग से मॉडरेट के साथ काफी तवील गुफ्तगू मेरी हुई। मैं जूम मीटिंग के जो नाज़िम है हमारे डॉक्टर शौकत हुसैन साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चंद ख्यालात मुझे रखने का मौका दिया। यहाँ पर तमाम जो लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी टूटी फूटी बातों को बगौर समझ फरमाया, सुना। कुछ मेरे असातिज़ा मीटिंग में भी सामने मुझे कैमरे में नजर आ रहे हैं। मैं उन्हें रूबरू जो है और टीचर डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद फतेह सर और दीगर असातिज़ा नजर आ रहे हैं, रईस सर, हमारे डॉक्टर रईस साहब, इन तमाम को जो है जिन्हें मैं अभी कैमरे में एक साथ देख नहीं पा रहा हूँ, तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल हम चले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सर। एक्चुअल में वोट ऑफ थैंक्स मेरा हिस्सा बनता था, लेकिन तहरीम को बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है 1 से 1.5 मिनट में वोट ऑफ थैंक्स दे प्लीज। उनका ज़्यादा हक बनता है बनिस्बत मेरे। तहरीम प्लीज वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। थैंक्स सर। थैंक यू सर। बोलिए, आ रही आवाज आ रही, बोलिए।
आवाज थोड़ी कम है सिराज सर, आवाज कम है, आ रही है लेकिन कम, जी लेकिन कर रहे हैं बच्चे, उनको करने भी।